Hi everyone, this is Arman Malik. Hi guys, मैं हूं Amal Malik and you are watching us on Desi Web USA. Catch our fun interview on Soundcheck with Urmin. Desi Web USA, the perfect dose to your entertainment. Hi guys, namaskar. मैं हूँ RJ Urmin and today I have two of my most favorite artists on the show जिन्हें कभी भी किसी introduction की जरूरत नहीं है. Hi Urmin, what's up? So nice to see you all guys. You know मुझे सच्ची में ऐसा लगता है I never get bored chit chatting with you all. I sincerely hope that बहुत जल्द मेरे शो का नाम Unplugged with RJ Urban brought to you by Amal and Arman Malik ये बन जाए. So एक और नया गाना आता है from the film Bell Bottom and I love this trio together which has Rashmi Virag, Amal composing it and of course Arman singing it. Arman मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी. Tell us something about this beautiful track. तुम आ गए हो के बारे में बताएं. तुम आओगे is a very emotional song and उसमें एक patriotic theme है obviously. लेकिन उसके अलावा I think the song is an emotional song that can, you know, speak to and touch a lot of lives, even though there's no even if there's no patriotic link to it. I think बहुत ही relatable गाना है. Even during COVID, I think there were a lot of loved ones far away, you know, in different countries, and बस हम यही चाहते थे कि, you know, कब तुम आओगे, कब हम मिलेंगे, कब, you know, we'll be able to be together. And वो एक बहुत ही universal emotion है. I think Amal and Virag sir have just done a fabulous male milap of the composition and the lyrics. It just fits so well. And when I heard the song and when Amal told me, you know, ये Bell Bottom में जा रहा है and you are going to be singing for Akshay Kumar sir, I was extremely excited because this is firstly my first song that I've sung for Akshay sir, and I think for me it's always, you know, been amazing to sing for all these different actors, sing it differently each time, because every song, every movie has a different emotion and I have to sing it in that vibe. I think तुम आओगे में अमाल ने मुझे रोका नहीं कहीं पे भी. Usually रोकता है वो कि ये मत कर वो मत कर. लेकिन तुम आओगे में he obviously I was, you know, during the process of them making the song मैं था, तो मैं सुन रहा था कैसा मतलब melody construct हो रहा है. Then the lyrics obviously Virag sir constructed it over a period of time. काफी changes भी हुए अंतरे में. लेकिन जब गाना मेरे गाना already मेरे ज़हन में था, लेकिन when I was singing the song क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, because he always like ये एक्स्ट्रा मुर्की मत कर यहाँ पे, सोल चला जा रहा है गाने. But I think ऐसे डांट के हर बार नहीं बोलता हूँ मैं, गलत बात है. नहीं मतलब I think अमल का क्या है ना, अमल has a very different approach when it comes to singing for his songs. He loves everything to be very simple, very plain, that anyone else can, you know, hum and sing. तो वो musically इतना complicated नहीं बनाना चाहता है for people, because ultimately fans and the audiences are going to be singing and you know, listening to this song. So in that way, I think he's bang on when he tells me to keep it simple, keep it natural. लेकिन इस गाने में अमल ने कहा कि, you know, तुझे जो भी मतलब रूह में जो आता है as a singer, feel the song and just, you know, do your magic. And I think that's where I let loose. I owned the song in a way where I feel like probably this is one of my personal vocal best performances that I've done so far. As somebody who listens to a lot of music and is surrounded by, you know, new songs, I think that I must say this, that शायद simple गाने या फिर songs like you said, you know, जिसे आराम से हम कर सकते हैं लोग, वो बनाना आज के ज़माने में सबसे challenging मुझे लगता है. And Amal, the way you have that, you know, idea in your mind or that brief in your head that, you know, मुझे इस तरीके का ही sound चाहिए, man, it's amazing. You're taking your time, you're creating music that, you know, is going to stay for a longer period, which is what is more important. Tell us about your experience. इस गाने के साथ कैसा रहा? मेरे लिए यानी ये वो गाने हैं जो मैं कभी किसी प्रोड्यूसर या, you know, लेबल या डायरेक्टर को कभी सुनाता नहीं हूँ. ये actually is the real me, I would say.
ये एक ऐसा गाना, you know, songs like this, तेरे मेरे, मैं रहूं या ना रहूं, मैं कह सकता हूँ, and till a point बोल दो ना जरा, I would say is, you know, still very a space, you know, कि हम लोग ने कौन तुझे में मैंने वैसा एक मूड किया है या कुछ तो है मैं किया है, बट मैं रहूं या ना रहूं के बाद I feel there is a complete purity in this song. And ये जब बना था, I think विराग सर and me were in one place, we were at his house, और मैं एक ऐसे एक कोने में था एक रूम के, and he was in another corner, and मैंने जिस विंडो में देख रहा था मैं, and I just had this melody, तारारा, इतना मैंने हम किया, and he turned, he said इसमें कुछ बात है, I'll write to this, and वहां से गाना शुरू हुआ, and मुझे यानी कहीं ना कहीं इमोशनली आई न्यू कि यू नो ये गाना डजंट फॉलो एनी रूल्स, यू नो कि ऑफ यू नो इट इज ट्रेमेंडस जो रिस्पांस आ रहा है गाने के लिए, यानी 3 दिन में इतना, मैंने हर रिलीज से मेरे को लगता है कि इस बार और यू नो बेटर रिस्पांस है, बट इसके लिए मैं नर्वस था क्योंकि ये कोई एक रूल फॉलो नहीं करता, इट्स नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड दैट्स हैपनिंग इन बॉलीवुड और ऑफ यू नो इवन लव सॉन्ग्स और डांस ट्रैक्स, ये कहीं अलग है, ये किसी का रूल बुक फॉलो नहीं करता है। एंड मैंने जब ये गाना अजीम दयानी को सुना है, हु इज द म्यूजिक सुपरवाइजर ऑफ दिस एल्बम, एंड ही इज बीन अ वेरी वेरी यू नो क्लोज एसोसिएट, हम लोग ने साथ में कर गई चुल, बुद्धू सा मन, 100 आसमान, आशिक सरेंडर एंड रोके ना रोके, सो व्हेनेवर वी हैव कम टुगेदर वो गाना हमेशा यू नो हैज रीच्ड आउट टू पीपल। सो मेरे को हमेशा डर लगता है कि मैंने कुछ इसमें इतना प्योर कर दिया मैंने और विराग सर ने कि ये समझेंगे या नहीं समझेंगे कोई फिल्म या यू नो प्रोडक्शन या ऑडियंस, तो वो एक इंटरनल आर्टिस्ट को हमेशा लगता है कि मैंने ऑलवेज लव सॉन्ग्स बैलेड्स इतने किए, ये वो है बट वो नहीं है, यू नो, तो देयर वाज दिस लिटिल फीलिंग कि हाउ इट विल बी रिसीव्ड, बट द मिनट even Akshay sir heard it and in Arman's voice he heard it first time, it was his suggestion, he said जैसा इसने गाया इसको प्लीज बदलना नहीं, मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज वेरी हैप्पी, यू नो, क्योंकि मेरी इंट्यूशन थी कि अरमान बहुत अच्छा गाएगा ये गाना, बट ऑब्वियसली व्हेन द एक्टर हियर्स ही आल्सो हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट उनका इमीडिएट रिस्पांस था कि अरमान ही गाएगा, सो आई वाज वेरी हैप्पी, यू नो, अरमान sang this song, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लिरिक्स को जस्टिस मिल पाता किसी और वॉइस में। उसने इस गाने में अरमान को मैंने इसलिए नहीं रोका है क्योंकि उसने लिटरली इम्पेकेबल परफॉर्मेंस दी है, हर एक लाइन, हर एक कोने को है ये यकीन आओगे एक लाइन है, यानी लिटरली, यानी मैंने जिस तरीके से सोचा था और फील किया था, अरमान हैज टेकन इट 5 steps ahead, so I love you man, Arman, you killed it. Love it. I think you know जिस तरीके से स्पाइडरमैन में ये एक बहुत फेमस लाइन है that with great power comes great responsibility. I think with great lyrics comes the responsibility of great composition. And Rashmi Virag with like, मतलब एक लाइन है जो मुझे खास बहुत पसंद आई, वो टूटे खिलौनों को है ये यकीन कि आओगे, यार, like what a thought. Even the fact that you know वो खिड़की की जो बात कर रहे हैं in the first few lines, there's just so much of warmthness in it that जो emotion की जरूरत है वो उस सही जगह पर आ रही है. And Arman, I know you also believe in this, but there's something very unusual, very different that you have done in this track, and it's just so pure. It's just so pure. I think it's coming of age of Arman. I feel अगर अमल कह रहा है कि वो this is his truest composition, I feel this is my truest singing. अगर आप वीडियो में भी actually I was in a trance जब you know when they were filming the video, you know, my portions, so they were obviously 3, 2, 1 action जैसे बोलते हैं, मतलब वो तो था ही, लेकिन after they just, when the shot was being taken, I was not acting it, I was just it was just inside of me, it was just flowing, and a lot of people just messaged me looking at me in the video. They first saw the video because they didn't expect me in the video. काफी लोगों को लगा था कि you know it'll just be a film footage kind of a thing, but वो मेरी जो एक video की edition है, वो lot of people have messaged me and saying कि we love how you emoted the song. And I feel कि I never even tried to do anything, हाँ मैं इस scene के लिए ऐसा emote करूँगा whatever. It was just me singing the song and feeling every word. And obviously this song has had a completely different meaning post
my grandmom passing away. So I just feel like that emotion was so strong in me, I couldn't hold it back. It just came through in the performance, in the video, and even in the song. Amal doesn't know this, but actually I had played the song to my dadi, love the rough scratch version. I had gone over and she wanted to hear Asha Amal kaun sa bhi gana bana raha hai bola sunana mujhe. So I played तुम आओगे to her and she was like, वाह क्या है, ऐसे गाने आज नहीं बनते, मतलब तुम लोग ये रिलीज कर रहे हो? तो बोले हाँ हम लोग ये रिलीज कर रहे हैं. दादी भी बहुत अपडेटेड होती थी. But would she also know. sing? Was she also a singer? Oh, she was a terrific singer. She used to keep singing. She used to keep singing in the house, like whatever. She used to keep singing ghazals. She used to sing old songs. She was always very proud that Amal and I have done songs that hold meaning. We're not just done songs ki हाँ गाना करने के लिए गाना किया है. So that was something that I was very, like, she was very happy about that. What was her favorite Amal and Armaan song? I think, what did you play? मैं रहूं बोल दो ना जरा. Which one was? मैं रहूं ना रहूं. She really loved. And यानी ये दोनों गाने, I don't know, like I have cried heavily when we lost दादी. और मेरे उस टाइम पे अरमान ने मेरे को एक्चुअली बहुत खुश कर दिया है बता के उस टाइम पे. I was very down कि मैं चाहता था she sees this release and मैं सुनाना चाहता था उनको कि I've made such a song, because ये कहीं ना कहीं is the era of 60s and the notes of my grandfather and that era of music. अंतरे में scale change होता है, ये चीजें आजकल नहीं हो रही है म्यूजिक में. And दादी is someone वो हमेशा updated रहती थी. She would see वो रियलिटी शोज में भी मेरे को कभी-कभी she used to sit बेटा सी देखो ये अच्छा सिंगर है, देखो इन्होंने क्या अच्छी बात बोली है. So she was always aware and बहुत critical होते थे. Like she has heard such great music. She is Hasrat Jaipuri's sister, so her level of poetry understanding, music understanding कोई नहीं है. पर अरमान ने luckily उनको ये गाना सुना दिया था. I'm just happy that she's heard this song and left us, and I hope it stays with both of them and they both are listening somewhere to Tum Aoge. Oh my God. Bro, I'm telling you, when I played it to her, she heard it and she said कि यार ये lyrics जो हैं, ये आज के time में ऐसे lyrics लिखना, इतने emotion लेके आना, every time she used to hear a song, उनका यही question था कि गाना लिखा किसने? क्योंकि and ये अमल का भी always focus रहा है. लोग काफी पूछते हैं अमल को, what's your process and what is everything. Amal's prime focus in a song is always lyrics. He doesn't care about his tune, will come whenever it has to come. Lekin his lyrics have to be bang on. His lyrics, everything has to have a meaning to it. Be it मैं रहूं, be it बोल दो ना जरा, every word has some meaning. And कभी-कभी, he sits down with Virag sir and sometimes he's not happy with it. He will not leave until he is happy with what the writer's written. And I think that he brings out a certain, certain work from certain people that I think no one else can. Because Amal ki jo lyrical sensibility hai, it's very, very strong. And I think that's what makes him a great composer. Melody, to obviously, I think all of us have it running in our DNA. So it just flows for us. Tunes, matlab, aisa nahi ki easy hai banana, lekin it comes through us very naturally. But when I see Amal really focusing on getting the words right, because I think a song becomes very, very memorable when you have words that just hit you. And I think that's what Amal focuses on. And I think Dadi appreciated the lyrics in Tum Aoge when I played it to her. So overall, I think the song has very, very strong emotions for me, for Amal, for our family. And so many people have, messaged me also, ki, I belong to an army family. And when I heard this song, I literally felt the emotion that, my brother or my sister or husband or whatever, whichever relative is there in the army, they were like, this just crushed me and gave me peace at the same time. How can a song devastate you because what it's saying is actually breaking you, but also at the same time it's giving you the calm ki haan tum aoge, that assurance also it's giving you at the same time. So I think that's the beauty of this song. यही फीलिंग आई थी व्हेन संदेशे आते हैं ये गाना आया था, एंड देन नाउ दिस सॉन्ग it just gives the same feeling कि घर कब आओगे, and then this is a song which says तुम आओगे. This is a homecoming song. इसमें वो belief भी है, but ये भी है कि खो दिया मैंने किसी को, but मैं फिर भी इस belief पे हूँ. And I think विराग सर को तो मैं I have to always, मेरे को लगता है मेरे लिए जो
यानी he writes incredible for every composer, but एक चीज है कि वो मुझे जितना जानते हैं as a human being ना, वो भी बहुत मैटर करता है कि as a person he knows the worst, the best, the ups, the downs of my entire life, यानी मैं उनके साथ सब शेयर करता हूँ, तो he understands where I come from. And literally हम लोग ने जो सेकंड जो अंतरा है जो YouTube वीडियो में, that was the second stanza, वो लिखने में हम लोग को at least 16-17 days चले गए, क्योंकि we were both not happy. हम लोग ने इतने ड्राफ्ट साथ में लिखे क्योंकि गाना रेडी था. द फर्स्ट अंतरा वाज व्हाट अरमान, द आंगन में धूप आती नहीं है, धूप आती नहीं है, फूलों की क्यारी भी रूठी, घर तक तुम्हारे जो जाती है राहें, मुंह मोड़ के हमसे बैठी, कमरों की किस्मत जगाने को आजा, मेरे अंधेरे मिटाने को आजा, हर एक कोने को है यकीन कि तुम आओगे. तो ये लिखने के बाद आई वाज लाइक, बॉस, इफ वी डोंट बीट दिस राइटिंग, then let's not have a second antara, then let it be one mukhda one, just one antara. But एक दिन, यानी रंजित सर also the director of the film, he's, उनके साथ भी एक बहुत special bond है मेरा. I worked with him on Hero, which was, he was working with Nikhil sir on that film, and हमारी तभी दोस्ती हुई, and today he's directing this film. तो उनके point of view से एक, he had sent this idea to me कि मेरे को एक द सिस्टर, द फैमिली, ये वाला जो एक रिलेशनशिप है सबका फिल्म में, और सब मोमेंट्स है कैरेक्टर्स के, कुछ उसको इन्वॉल्व करते करते भी आई नीड वन मोर स्टैंजा फॉर द फिल्म. सो आई सेड ओके, आई विल वर्क ऑन इट. और 17 दिन बाद लिटरली दिस लाइन केम अबाउट कि हाथों की चूड़ी है खामोश देखो, टूटी बुढ़ापे की लाठी, पूजा की थाली में दम तोड़ती है बहना की प्यारी सी राखी. एंड आई टोल्ड विराग सर, आई वाज लाइक, अब आई है बात. आई वाज लाइक, ये है. अरमान, you want to sing a few lines? गा ही दो. हाथों की चूड़ी है खामोश देखो, टूटी बुढ़ापे की लाठी, पूजा की थाली में दम तोड़ती है बहना की प्यारी सी राखी. हो मीठी सी लोरी सुनने को आजा, ममता के आंचल में छुपने को आजा, हर एक कोने को है ये यकीन आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे. मेरा घर तेरे बिना सुना Oh God, guys, क्या कर रहे हो यार? Amal sing the mukhda. Come on, Amal. मेरा घर तेरे बिना सोना है, मेरा घर तेरे बिना सोना है, खाली दीवारें तुझको पुकारे, खिड़की की तन्हाइयां बस निहारे, वो रास्ता जिस पे चल के तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे. ये फर्स्ट लाइन में, when I, even while singing it now, the minute that line is, it's the lyrics was, I would say number one lyrics in this song. उधर से ही ये गाने का एक, यानी it that's what makes the song from being just a good song to becoming a forever song. I think big respect to Virag sir and Arman ने जो rendition किया है at this baby age to do such a deep song, killer.
लड़का बड़ा हो गया है सर, लड़का बड़ा हो गया है। कमिंग ऑफ एज यानी सिंगिंग में भी मैं वो जो लास्ट में दैट टूटे खिलौनो पार्ट व्हिच इज देयर, Arman, what is that Murki please do for everyone now that you've done it in the song, now do it live also. This is the first antara na? Second, the टूटे, the last one. अच्छा. टूटे खिलौनों को है ये कि आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे. Oh All my these God. notes that he has touched in this song, he has never done in any other song of mine. So I'm very happy कि ये सब हरकतें, जगहें, Finally he's let me do all these things. देखो बेटा इस गाने में जगह थी करने की, बाकी में नहीं थी. बट क्या कमाल किया है यार वो. एंड हाँ, आई थॉट यू वर स्टक, बट अरमान दैट एंड, you've taken it to like from already it was here, you've just gone like खड़ी हो जाती हो. That end was very very necessary. वो जो एक wow. minor chord आता है, I think that just changes everything. That it just hits home, that emotion. Too many feels. Guys, like I am just overwhelmed. I mean, I have heard this song, but I want to hear it again now for every word, every line जिसके बारे में हमने बात की in this interview. And it's just, I'm so glad that this is a song that is coming out in today's day and age, because we need it. It's the need. Because we're literally, I mean, I discussed this with my friends. 90s में हमारे favorite गाने होते थे. We had a specific playlist. आज के ज़माने में काफी difficult होने लग गया है गाने ढूंढना जो हमें बहुत पसंद है. But this is definitely going in that playlist of mine, which I truly believe is my personal favorite. And Amal, top five favorite songs. Thank you. Definitely. Thank you so much. जैसे अरमान आपने शुरुआत में ही कहा that this is a song not just for the film but also for those people जो इस कोविड टाइम्स में अपने फैमिली से दूर है, अब्रॉड रह रहे हैं, and have not seen their loved ones for so long. I think this is a great dedication. Guys, thank you so much for touching the right chord. ये आप लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा कॉर्ड है, लेकिन असल कॉर्ड जो है वो यहाँ दिल का कॉर्ड है, दिल का कॉर्ड है, और वो अच्छी तरीके से प्ले हो रहा है एकदम परफेक्ट ट्यून में. सो थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग. Thank you so much. Desi Web USA, the perfect dose to your entertainment.